Our next and important topic is actually distinguish elements. In distinguish elements, we are going to learn about maximal element, minimal element, greatest element, and least element. Okay. So firstly, let us define the maximal element. An element M, we will always represent these elements by the small letters, as we have mentioned in this. आप उसे कुछ भी एलिमेंट सपोज कर सकते हैं, बट उन्हें फिक्स करने से यू कैन ऑलवेज इजीली अप्लाई द डेफिनेशन. सो मैक्सिमल एलिमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, minimal element is always represented by small n, and greatest element is always represented by small a, and least element is always represented by small b letter. इस तरह करने से आसानी ये रहेगी कि we can easily apply that definition. Otherwise it's not a hard and fast rule, but for the easy application of the definition, it would be suggested that आप इनको यही consider करें कि maximal element is always in small m. Now an element m belongs to A, where A is a partially ordered set, is called a maximal element of A if none of the element of A is strictly greater than m. Thus, in other words, we can say that for all x belongs to A, if x is greater than or equal to m, यानी m जो आपने मैक्सिमल एलिमेंट कहा हुआ है, x कोई भी एलिमेंट ऑफ A उससे ग्रेटर हो जाता है, then in that case x ही आपके पास मैक्सिमल एलिमेंट बन जाता है. then in that case x is equal to m. और सिंपली आपके पास डेफिनेशन है, if none of the element of A is strictly greater than m, then m is called the maximal element. And इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं हम मैथमेटिकली लाइक दिस. इन अदर वर्ड्स, m is strictly greater than x. If m is the maximal element, then m is strictly greater than x for all x. Again, this strictly greater or strictly represents the order relation. जो भी वहाँ पर order relation होगा उसे आप strictly इससे replace कर देंगे. Similarly, minimal element, an element n belongs to A is called minimal element if none of the element of A is strictly less than this n. Then you say that, in other words, that is n is strictly less than x. None of the element is strictly less than n means n is the smallest in that regarding to that order relation, or you can say that n is strictly less than x for all x if n is the minimal element. In our other way around, you can say that for all x belongs to A if x is less than or equal to. इस minimal element से भी कोई छोटा अगर element है, then in that case वो element आपके पास minimal बन जाएगा. But for the application of definition, we will always apply this definition that n, if n is a minimal element, then it means that n is strictly preceded by x for all x belongs to that set. Now the definition of greatest element. An element A belongs to A is called the greatest element of A if A is greater than or equal to x for all x belongs to A. And second definition is least element. An element B belongs to A is called the least element of A if B is less than or equal to x for all x belongs to A. For every x belongs to A or x belongs to A. Again, less than or equal to or preceded by actually represents the order relation in that set. Sometimes वो order relation आपके पास less than or equal to हो जाता है in case of numbers. In case of sets वो आपके पास containment हो जाता है order relation, और division भी हो सकता है. Many other relations are always there. It is easy to see that if A has the greatest element or the least element, then it must be unique. Again, in definition से maximal and minimal element more than one हो सकते हैं. But in case of greatest and least element, when we say that these elements exist, then they must be unique. There can never be two greatest element. There can never be two least element. If there exists a least or greatest element, then that must be unique. And to prove this, we have supposed that let A and A prime are two greatest element of a set A. Then for the first definition, if we say that A is greatest element, then it means that this will act as an ordinary element of A, and from the definition of greatest element, A prime must be less than or equal to A, or in other words, we can say that A is greater than or equal to A prime because greatest की यही definition है. And when we say that A prime is greatest, तो A will act as an ordinary element, और उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, A prime must be greater than or equal to A. From these two conditions, you can say that if A is less than or equal to A and A prime is less than or equal to A, here we can say that A is equal to A prime, proving our statement that there can never be two greatest element. अगर हैं तो वो एक ही element होगा. Similar is the case for the least element. Again, maximal element definition. Memorize the definition for the greatest, maximal, minimal. This definition actually, m is strictly greater than for all the elements of A, x for all the elements of A, and n is strictly less than for all the elements of A,
For the greatest, we can say that A is greater than or equal to X, and least B is always less than or equal to X for every X in that set. और मोर देन वन मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं. समटाइम्स किसी भी सेट के अंदर लाजमी नहीं है कि मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करें. वी कैन चेक इट इन आवर एग्जांपल्स. समटाइम्स एग्जिस्ट नहीं भी करते, बट अगर ग्रेटेस्ट और लीस्ट एग्जिस्ट करते हैं देन दे मस्ट बी यूनिक. Okay, now here's an example. We have to find the distinguished elements. First example is, let A be this set containing these certain elements, be ordered by the relation x divides y. Now इस एग्जाम्पल पे जाने से पहले फर्स्टली प्रूफ आप अपने लिए ये प्रूफ करेंगे कि x डिवाइड्स y का जो रिलेशन है डिवीजन वाला, ये इज एन ऑर्डर रिलेशन. मींस इट सेटिस्फाइज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. मैंने यहाँ सपोज किया हुआ है यस डिवीजन इज एन ऑर्डर रिलेशन. ओके, बट आप अपनी आसानी के लिए कि ये कैसे हो सकता है, यू विल प्रूव इट जनरली. ओके, find the maximal, greatest, least and minimal element means distinguish elements. and इस रिलेशन का एक्चुअली मतलब ये है कि x is preceded by y if and only if x divides y. Here clearly it is written that x divides y. x y को डिवाइड करता है. ओके, completely डिवाइड करता है. when we say that x divides y, तो इसका मतलब ये होता है वो उसको completely डिवाइड करता है, as you have done in your number theory. okay, इट मीन्स कि जहां जहां आपके पास प्रीसीडिंग का सिंबल होगा आप उसे रिप्लेस करेंगे विद, इन दिस केस, इस केस में आप उसे रिप्लेस करेंगे विद दिस डिवीजन सिंबल. ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड. हियर दिस इज प्रीसीडेड बाय इज रिप्लेस्ड बाय दिस डिवीजन सिंबल. अच्छा, इस एग्जांपल में जितना भी मैंने एक्सटेंड करके किया, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आप डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख सकते हैं. दिस इज मैक्सिमल, दिस इज लीस्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट एंड दिस इज minimal element. But how it works I have explained through this example. Firstly, एलिमेंट्स फाइंड आउट करने से पहले मैं अप्लाई करना चाहती हूँ कि कौन से एलिमेंट्स किसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. ओके, सो फ्रॉम वन, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन डिवाइड्स वन itself, b we will take it because reflexive property होती है. So 1 divides 1, yes. 1 divides 2, yes. 1 divides 3, 1 divides 4, 1 divides every element of this set. ठीक है ना, completely divides every element of set. So 1 divides every element of. Next element is 2. 2 doesn't divide 1, completely divide. If we talk about it, will gives us 1 point something, 1.5, 1.2, whatever it is. So 2 divides 2 completely division की अगर हम बात करेंगे तो 2 divides 2, 2 divides 4, 2 divides 6, 2 divides 8, 2 divides 12, 2 divides 18, 2 divides 24. 2 doesn't divide 9, so we haven't written it. 2 doesn't divide 3, so we haven't write it. Okay, next 3 के लिए भी आप लिखेंगे, 4 के लिए भी, 6 के लिए भी, 8, each and every element, 9, 12, 18 and 24. Now from here we have seen that कौन से एलिमेंट किसको डिवाइड करते हैं. मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन है आपके पास, m is strictly greater than x for all x belongs to a, then this m is called what? This m is called maximal element. So here in this case हमने कहा है जहां जहां preceding वाला symbol होगा उसे आप replace करेंगे. Whenever there is a symbol, preceding symbol, you will replace it by division. और जब ये preceding के अलावा दूसरा आ जाएगा तो always वो फिर क्या हो जाएगा, does not divide वाला केस हो जाएगा. जैसे partially ordered sets के start में मैंने आपको बताया था कि वो represent करेगा does not वाला केस. So यहाँ m is strictly greater है, तो it means m does not divide x for all x belongs to a. So here maximal element की definition क्या हो जाएगी, m does not divide x. That element is called maximal element if it doesn't divide any element. That does not divide any x. और in that case ऐसा एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट होगा जो ए के किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर रहा होगा. एंड इन दैट केस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 18 और 24 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के किसी और एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर रहे हैं. अगर हम 12 की बात करें तो 12 24 को कर रहा है, अपने सेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड, बट अपने अलावा ए के किसी और एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर रहे, तो वो एलिमेंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, मैक्सिमल एलिमेंट्स हो जाएंगे. सो फ्रॉम हियर वी हैव सीन दैट 18 and 24 आर द एलिमेंट्स दैट डजंट डिवाइड एनी अदर x. So it means that these are maximal element. Now talking about the minimal element, definition is n is strictly less than x.
or we can write it as x is strictly greater than n, बिकॉज यहाँ पर जब हम प्रीसीडिंग की बात करते हैं तो वो आपके पास होता है n इज लेस देन आर इक्वल टू x, या तो आपके पास लेस देन आर इक्वल टू आना चाहिए या फिर ग्रेटर देन आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस है तो उसका हम रिप्लेस करने में हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, सो हम इसको कन्वर्ट करके वी कैन राइट इट एज x इज ग्रेटर देन n, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। और फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अब अगर हमें रिप्लेस करना होगा तो हम लेस देन आर इक्वल टू रिप्लेस करेंगे विद डिवीजन सिंबल, और जहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू नहीं होगा अपोजिट हो जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, तो उस केस में आप उसे डज नॉट डिवाइड कह देंगे। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x डज नॉट डिवाइड n फॉर ऑल x, and what does this statement means? And this n is called the minimal element. Those element or elements are called the minimal element which are not divided by any x, which are not divided by any x. Now divides and divided by are two different things, okay? So from here यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो किसी और एलिमेंट से डिवाइड ना हो रहे हो, मीन्स कोई भी एलिमेंट इसको डिवाइड ना कर रहा हो, कोई भी एलिमेंट n को डिवाइड ना कर रहा हो, तो वो वाला n आपके पास इज कॉल्ड द मिनिमल एलिमेंट विच इज एक्चुअली नॉट डिवाइडेड बाय x, ओके। सो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो 1 ऐसा एलिमेंट है जिससे कोई भी और एलिमेंट डिवाइड नहीं कर रहा, दिस वन 2 डिवाइड्स कर रहा है 1 को, नो 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, नो नो नो, इट मीन्स दैट 1 इज दैट एलिमेंट दैट इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर x. So we have to find those elements which are not divided by any x. That element is called, yeah, those elements are called minimal element. So here in this case 1 is that element that is not divided, x does not divide 1 for all x. Simply you can say, as you can check that x does not divide 1 फॉर ऑल x, कोई भी x जो है आप 2 पुट कर दें 2 डज नॉट डिवाइड 1, 3 पुट कर दें 3 डज नॉट डिवाइड 1, 4 डिवाइड कर दें, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आप उन्हें चेक करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सो इट मीन्स दैट 1 इज द मिनिमल एलिमेंट, ओनली मिनिमल एलिमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन है a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x फॉर ऑल x। अगेन हमने सिर्फ लेस देन आर इक्वल टू को रिप्लेस करना है, सो फॉर दैट हम इसको अदर वे अराउंड लिखेंगे, दैट इज x इज प्रीसीडेड बाय a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। प्रीसीड को रिप्लेस करेंगे इन दिस केस बाय द डिवीजन सिंबल, सो इट मीन्स दैट x डिवाइड्स a फॉर ऑल x। अब वो एलिमेंट आपके पास ग्रेटेस्ट हो जाएगा, दैट सिंगल एलिमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट, दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल एलिमेंट, दैट सिंगल एलिमेंट इज द ग्रेटेस्ट व्हिच इज डिवाइडेड बाय एवरी x, which is divided by every x, then that element is called the greatest element। कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ लिखें x divides a होना चाहिए। सपोज हम अगर 24 ले लेते हैं, बड़े एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो 1 तो ऑब्वियसली किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, 24 लास्ट वन क्या है आपके पास 24, अगर हम 24 से ही चेक करें या फिर इस टेबल से ही आप देखें कोई ऐसा है जो हर एक एलिमेंट उसको डिवाइड कर रहा हो। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 24 तो 1 24 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, बट 9 नहीं कर रहा, कोई एक भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। 9 नहीं कर रहा, अगेन 18 नहीं कर रहा, सो इट मीन्स दैट 24 भी आपके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। इवन इफ यू टॉक अबाउट 18 तो 18 भी आपके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 18 के बाद 24 है, दैट डजंट डिवाइड 18। सो इट मीन्स दैट यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, व्हेनेवर वी विल पुट इट ओवर हियर इट विल सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। कुछ भी यहाँ पुट कर दें, 24 पुट करें, 18 पुट करें, 19 पुट करें, एवरी x के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे तमाम एलिमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट देयर इज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन दिस केस। देख लें यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं भी किया। Now we are talking about the least element, and definition of least element is b is preceded by x, or b is less than or equal to x for all x belongs to a. So यहाँ पर less than or equal to already in the condition है, so we can replace it by the division symbol. So b divides x for all x. ऐसा element आपके पास least element, unique element, least element कहलाएगा जो हर element को divide कर रहा हो। ऐसा element जो हर एक element को divide कर रहा हो। So we have one over here. Now look at this, 1 divides every element, 1 divides every element in the set, so it means that 1 is the least element. Again आपके पास अगर आसानी के लिए बताऊं तो जितने भी मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उन्हीं में से कोई एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है
फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और जितने भी मिनिमल एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक आपके पास लीस्ट एलिमेंट बनता है, बट कोई एक, समटाइम्स नहीं भी होता, यहाँ पर कोई ग्रेटेस्ट नहीं भी है, लेकिन अगर कोई ग्रेटेस्ट होता तो वो 18 और 24 में से ही हो सकता था, अदर देन दैट नहीं हो सकता था। So यहाँ पर 1 is the least element. Hope you have understand this example. Whenever there is a relation, you will always replace that relation by the गिवन रिलेशन। समटाइम्स आपके पास, मैंने आई थिंक आपकी असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है कि उसमें आपके पास जो ऑर्डर रिलेशन उस सेट के ऊपर डिफाइंड है, दैट इज कंटेनमेंट फॉर द केस ऑफ सेट्स। तो आप वहाँ पर एलिमेंट्स जब भी लिखेंगे उनको लेस देन आर इक्वल टू है तो उससे आप रिप्लेस करेंगे बाय द कंटेनमेंट सिंपल, और फिर जो ग्रेटर वाला साइड आ जाएगा आप उसे कहेंगे डज नॉट डिवाइड एंड सो ऑन। डेफिनेशंस को याद रखेंगे और आप उसमें जस्ट रिप्लेस कर देंगे लेस देन आर इक्वल टू को बाय द ऑर्डर रिलेशन दैट यू हैव गिवन।